Hello student, in today's video we are going to learn it is of about relative refractive index. So what is the meaning for this relative refractive index and how do we calculate it? So for this student I am going to suppose that here it is the interface XY which is separating the two media. So above of it that I am going to consider it is that medium number 1 and that is let us suppose it is as water medium water is there, and under of this there is another medium, so it is medium number 2. Let us to suppose that it is glass. Okay, now over here that on this interface I have drawn a perpendicular, so this is said to be as normal, and it is that point where this ray of light is going to incident. So here it is going to incident, so this is incident ray and it is going to fall at an angle I. Okay, and over there when it changes its medium, so see over there out of water and glass which is denser, we are having the answer that this glass is denser as compared to that of water, therefore it will bend toward the normal, thus we are having it is over here that angle of refraction is there. Okay, now student look over here that what you suppose that the speed of light in water is this equal to c means 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या पानी के अंदर पानी की जो लाइट की स्पीड है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है? नो, दिस इज नॉट द स्पीड। ठीक है, वाटर के अंदर हमारे पास स्पीड क्या रह जाती है? इट इज़ 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड इन वाटर। ठीक है, so over there I'm going to suppose then this speed it is v1, it is not c, it is v1. Okay, and over there when it goes in this another medium, so at that time its speed changes. ठीक है, so this speed let it be now v2. ओके, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है इस वाटर मीडियम में दैट वाज v1 एंड इन दिस सेकंड मीडियम इट बिकम्स v2. ओके, नाउ दिस इज वाटर medium, so it is medium number 1. Make it as your medium number 1, while this glass it is your medium number 2. Okay, now over here student that mm, you will find that the ratio of the speed, just to look over here that here the ray it was going to incident with the speed v1 and after refraction it goes with the speed v2. Okay, so this ratio of the speed is equal to that relative refractive index. It is relative refractive index. Now to check over there, this light is going from first to second medium. Okay, so how you will write this one? It is first to second medium, here you will write this. Okay, this is relative refractive index. So what is that? It is the ratio of the speeds in the two media. Remember over there जो हमारे पास ऊपर कौन सी स्पीड लिखी जाती है, वो स्पीड जो इंसिडेंट रे की होती है, दैट स्पीड इट इज टेकन इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में कौन सी, जो बेंट रे है उसकी स्पीड लिखी जाती है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लेकिन ये कैसा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नाउ हाउ इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो स्टूडेंट हमने जस्ट रिकॉल करो, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर एक वैक्यूम मीडियम होता है तो उसमें लाइट की स्पीड सी, और जैसे ही वो किसी दूसरे मीडियम में मूव करेगा तो उस वक्त लाइट की स्पीड चेंज हो जाती थी, वो वी बन जाती थी। तो इसलिए जो रेशियो ऑफ स्पीड्स था उसको हमने क्या बोला था? दिस वॉज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट वॉज एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है? तो एब्सोल्यूट में एक मीडियम वैक्यूम होता है, ठीक है, और दूसरा कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी ग्लास, दैट मे बी वाटर, दैट मे बी दिस ऑयल, दैट मे बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, बट ओवर देयर इन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? द मीडियम्स इज अदर देन वाटर, अदर देन वैक्यूम। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जैसे यहाँ पर फर्स्ट मीडियम वाटर था, दूसरा ग्लास था, तो ये अदर देन वैक्यूम हो रहे थे, तो इसलिए जो रेशियो ऑफ स्पीड्स था हमारे पास दैट वाज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नाउ ओवर हियर यू कैन राइट दिस वन एज let us to multiply and divide by c over here. Okay, what I am going to do,
I'm going to multiply and divide by c. Okay, so because of this what will happen, so you will find that जो हमारे पास सी वाई वी वट वॉज रिटर्न दैट इट वॉज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये किसका, यहाँ पर देखो, जस्ट आई एम गोइंग टू सेपरेट दिस वन वी वन बाई सी इंटू सी वाई दिस वी टू। ओके, दिस इज ओवर देयर। नाउ चेक ओवर दिस वन, जो हमारे पास सी वाई वी टू, ओके, सो दैट वट इट इज गोइंग टू बी, इट इज दैट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लेकिन कौन से मीडियम का, सेकंड मीडियम का। ठीक है, सो दस आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेयर दिस इज गोइंग टू बी एज सी बाई वी टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड मीडिया यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। एंड सिमिलरली ओवर देयर दिस इज दैट ऑफ सी वाई वी वन, so this will be the refractive index, absolute refractive index of first media. So student, this c by v2 I'm going to write it with the n2, and this is reciprocal over here, so therefore it becomes n1. So thus it is what, it is relative refractive index. So now just to check over here, what is relative refractive index? So either you can say that it is the ratio of the two speeds in the medium, or either you can say that it is the ratio of refractive index of second to that refractive index, absolute refractive index of second to that absolute refractive index of first media. Okay, so how you will read this one? So it is read at refractive index, relative refractive index of second medium with respect to first medium. Okay, so in this way that we are going to read it as, so it is n to 1. Now just to suppose that if here what was happening, the ray was going from first to second medium, here it was going from first to second, check over there, first to second it was going. Okay, if we are supposing that the light ray goes from that of second to first, अगर हम रिवर्स कर देते हैं, सो हाउ विल यू राइट दिस वन इन द रेशियो, देन इट विल बिकम ओवर देयर दैट ऑफ n by n1 by n2, then this you can write. And how will you read it? So it will be relative refractive index of this first medium with respect to second medium, that of second medium. Okay, this is the way to read this term over here. Okay, so thus we come to know over here relative refractive index. So what is this relative refractive index, student? So you can now use this formula, that it is the refractive index, it is the ratio of the refractive index, or either it is the ratio of the speeds in the two media. Okay, so this is said to be relative refractive index. While what is absolute refractive index? So absolute refractive index, it is the ratio of the speed of light in vacuum to that speed of light in a medium. Okay, so thus we are having over here, it is that relative refractive index and this absolute refractive index. Even though this relative refractive index is also unitless, it is not having any unit. Okay, now let us to learn more term over here, student. I am going to suppose that it is the interface, and here it is the normal. Okay, this is what it is, normal. Now if a ray is going to fall along the normal, there is this ray, so it is falling along the normal. Okay, so what is the incidence angle and what will be the angle of refraction for this? Okay, what will be the angle of incidence and angle of refraction for this? So student, already we said one thing, that whenever we have to take incidence angle, so it will be with the normal के साथ वो ray बना रही होगी. But over here that incident ray is going along the normal, so therefore this incidence angle is 0, and that means ये यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है. ओके, सो इट गोज undeviated, so thus angle of refraction is 0 in this case.
Okay, so that's over here, student, that we come to know the logic over here, that if a ray falls perpendicular to the surface, perpendicular in the sense mean to say that along the normal, perpendicular to the surface, it will not deviate. ठीक है, तो ये अपने एक्चुअल पास से दूर बेंड नहीं करेगी, इट विल नॉट डेविएट। ओके, सो दस देन व्हेन इट विल डेविएट, ठीक है, तो ये डेविएट कब होती है, सो रिमेंबर फॉर दिस वन, मतलब डेविएट मतलब कि उसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो इसलिए रिफ्रैक्शन कब होती है, सो टेक्स प्लेस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन रे फॉल्स एट एन एंगल, एट एन एंगल विद नॉर्मल। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई रे एक एंगल के ऊपर फॉल करेगी नॉर्मल से, सो एट दैट टाइम रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। इफ रे विल बी along the normal, then there will be no deviation, it will pass straight without bending, it will go straight. That time angle of incidence, angle of refraction, both will be zero. Hope so that today's topic is clear to everyone. Thank you for watching.